तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10th से पॉलिनोमियल्स चैप्टर का पार्ट 3 में सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लाया हूँ। वन ऑफ द क्वेश्चन इज बिफोर यू। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial, that is f of x is equal to x square minus pq plus q. So you have to prove that alpha square by beta square plus beta square by alpha square is equal to p to the power 4 by q square minus 4p square by q plus 2. So now student, just I am going to start the solution. First we write f of x is equal to x square minus pq plus p. Okay, no pq, here x should be x and here q, and alpha beta are its zeros. Alpha beta are its zeros. Okay, now alpha plus beta minus by, you have known, it is well known, minus p, b का वैल्यू है minus p by 1, that is alpha plus beta is equal to p. And now alpha into beta equal to c by a, that means q by 1 is equal to q. So this LHS equal to alpha square by beta square plus beta square by alpha square. On solving, we take out LCM of alpha square beta square. It is the product alpha square alpha to the power 4 beta square plus beta square beta to the power 4. Now first of all, numerator is simplified. So just I am going to simplify the numerator of this section. Alpha to the power 4 plus beta to the power 4, that means alpha square whole square beta square whole square. So you know a square plus b square is equal to a plus b whole square minus 2ab. So we have to solve alpha square plus beta square whole square minus 2 alpha square beta square. Just once again we use for this a square plus b square, that means alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Okay, and that of whole square minus 2 alpha beta whole square. Expanding it by putting the value, alpha plus beta means p square minus 2q and whole square minus 2 alpha beta q, that means q square. Now here this term is considered a and this is b. A minus b whole square, a square, that means p square whole square plus 2q square whole square minus 2a into b minus 2q square. Simplified, p square whole square p to the power 4 plus 2 square 4 q square whole square q to the power 4 minus 2 to the 4 p square q minus 2q square. Okay, here 2q, not 2q square, so here also 4q square
p to the power 4 plus, here you see 4q square minus 2q square, that means 2q square minus 4p square q. Now put this value in the equation, this of LHS. So from LHS, value of this term is p to the power 4 plus 2q square minus 4p square q upon, this is q of square q square. Now p4 by q square plus 2q square by q square, denominator is separated for each numerator, 4p square q by q square. Okay, so this q and a square cancel, this q square and q square cancel, so remained p to the power 4 by q square plus 2 minus this, so you can change the place, minus 4p square by q plus 2. So this is the RHS. Okay, RHS, and here proved LHS is equal to RHS, I have proved. So students, now just I am coming for solution of question number 2. Just I am reading the question number 2. If the squared difference of the zeros of the quadratic polynomial function in x is equal to x square plus px plus 45 is equal to 145, find the value of p. That means you don't be confused. Squared difference, suppose alpha beta are its two zeros. So here is the solution. Let alpha beta be zeros of function in x is equal to x square plus px plus 45, and it is given squared difference, that means alpha minus beta to the whole square is equal to 145. So here alpha minus beta is equal to root under 144. Alpha minus beta is equal to 12. Okay. Now we have alpha plus beta from the given function, alpha plus beta equal to minus b by a, that means minus p. Okay, and alpha into beta is equal to 45. So here we use one of the formula, a plus b whole square equal to a minus b whole square plus 4ab. That's why alpha plus beta whole square is equal to alpha minus beta whole square plus 4 alpha beta. Here minus p whole square is equal to alpha minus beta, that means here you can write plus minus, okay, no problem. Alpha plus beta, that means alpha minus beta, that means plus minus 12 you can tell, and plus 4 alpha beta means, you see, alpha beta, where is alpha beta? 45. You see here p square is equal to 144 plus 180. P square is equal to 324. So now p equals to plus minus root under, okay,
324. So P equals to plus minus 18. So here is the solution of the question and the answer is P equal to plus minus 18. Hello students, question number 3 आपके सामने है. If alpha, beta are zeros of quadratic polynomial function in x equal to kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square equal to 24, find the value of k. Just first of all we have to write solution, then f of x kx square plus 4x plus 4, and now from this we have to find alpha plus beta minus b by minus 4 by k. Alpha beta, that means alpha into beta c by a, that means 4 by k. What we have given? Alpha square plus beta square, यानी a square plus b square, this is 24. यहाँ पर हम यूज करेंगे a square plus b square, a plus b whole square minus 2ab. That means alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta is equal to 24. So अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 4 बाई के पुट करेंगे, एंड माइनस 2 अल्फा बीटा 4 बाई के इज इक्वल टू 24. 4 4 जा 16 बाई के स्क्वायर minus 2 4 जा 8 by k is equal to 24. Now you see LCM k square, here 16 minus 8k equal to 24. तो हमारे पास आ रहा है 24k स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 माइनस 8k. अब यहाँ लाते हैं इसको लेफ़्ट साइड. 24 यहाँ पे पहले तो 8 कॉमन ले लेते हैं. 8 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 2 माइनस k कैंसल. अब हमारे पास आया 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आया 3 2 जा 6 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0. 3k k प्लस 1 माइनस 2 k प्लस 1 0. और इस तरह से आया 3k माइनस 2 k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आएगा. ये हमारे जो बच्चे स्पेस हैं उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ. ये आया 3k, इफ़ 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो 3k आया 2, सो k इक्वल टू 2 बाई 3. और इफ़ k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 k इक्वल टू माइनस 1. Hence there are two values of k equal to either minus 1 and 2 by 3. So this question solution has completed now. Student, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल
एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के satisfying alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4, then find the value of k for this to be possible। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन की ओर जाते हैं और सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू जो दिया है साथ ही इनके जीरोज हैं अल्फ़ा बीटा आर इट्स जीरोज, देन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा सी बाय ए। अब हमारे पास जो कंडीशन दिया है गिवन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4। इनमें करेंगे क्या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा तो लिखा ही जा सकता है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -5/2 माइनस अल्फ़ा बीटा क्या है k/2 21/4। फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं इसको, तो 5 स्क्वायर 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4 माइनस k/2 21/4 माइनस 25/4 माइनस k/2 4 21 माइनस 25 here minus k/2 माइनस 4/4 ये कैंसिल हो गया, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 इज द required solution of the question, so here answer completed। Students, now I am on the question number 5. It says if alpha beta are the zeros of a quadratic polynomial such that alpha plus beta 24, alpha minus beta 8, find a quadratic polynomial having alpha and beta be its zeros। As we know, alpha beta be zeros of a quadratic polynomial, then required quadratic polynomial is p of x k x square माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। So we have to find alpha beta. We have given alpha plus beta, alpha minus beta. As you know, alpha plus beta whole square यानी a plus b whole square alpha minus beta whole square plus 4 alpha beta. Here alpha plus beta means 24 whole square, अल्फ़ा माइनस बीटा 8 का होल 8 स्क्वायर प्लस
4 alpha beta. 24 square 576 minus 64 8 square is equal to 4 alpha beta. 6 में 4 2, 7 में 6 1 5 अपॉन ये 4 इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा अपॉन 4 कैंसिल 4 1 जा 4 2 जा 4 8 जा. Okay, so here we have found alpha into beta is equal to 128. Hence we got required polynomial is equal to k x square minus alpha plus beta means 24 x plus alpha into beta means 128. So students, for you I have completed today. Thank you.